सुनिए 100 से भी ज्यादा सोच अपनी भाषा में सिर्फ सोचकास्ट पर। गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ा, बंगाली और तमिल में भी सोचकास्ट। अपनी सोच दुनिया को सुनाओ और सुनो दुनिया की सोच। डाउनलोड कीजिए अभी गूगल प्ले से या सुनिए www.sochcast.com पर। तो गाड़ी ख़राब हो चुकी है और हम वेट कर रहे हैं कि शायद अगर उसका इंजन या ट्रांसमिशन फ्लूइड या कुछ कूल डाउन हो जाए रात भर और सुबह सुबह हम धीरे धीरे यहाँ से निकल तो जाएं और उसके बाद शायद उसे फ्लैट बेड पे लगाकर सबसे नज़दीक टोयोटा डीलरशिप पे जाकर उसे दिखा दें। तो ये है प्लान। मन तो करता है कि वो जो पीछे पहाड़ है उसी को पार करना है वापस जाने के लिए, जिस पहाड़ में ये गाड़ी खराब हुई थी। ग्लोब लैंडर। अब एक ही चीज़ कहूँगा तुमको मैं, चल धन्नो, बसंती का इज्जत का सवाल है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये आज इस थोड़ी सी टूटी हुई गाड़ी के साथ हम इस पहाड़ को चढ़ रहे हैं ताकि हम इस पार हो जाए और रेगुलर रोड्स में हम पहुंच जाएं और सुबह के 6:45 बजे 4 व्हील लो से ही हमको गाड़ी चलाना पड़ रहा है आज। और वही जो ऊंची पहाड़ से हम नीचे आए और गाड़ी ख़राब हो गई, उसी पहाड़ को हम वापस पार करने की कोशिश में हैं आहिस्ता आहिस्ता। और आप लोगों के सारे ब्लेसिंग्स के साथ शायद ये भी हम इस चैलेंज को भी पार कर जाएं। सूर्य उदय में ये पहाड़ इतनी खूबसूरत लग रही हैं और वो नज़ारे आपको भी हम दिखाएं इस वीडियो के ज़रिए। दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी वर स्टक yesterday for a while waiting for the engine to cool, but this was only the beginning of the descent. The real hill is up ahead of us. And the new Globe Lander is working with us. Shabash mere dost. That was a steep hill, and now come the switchbacks that are equally steep but in short spurts. Okay, here goes. जय बजरंगबली की जय, 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 जय बजरंगबली की जय। बोलो जय बजरंगबली की जय, 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 बोलो जय बजरंगबली की जय। गणपति बाप्पा मौर्य। ये होना कात ग्लोब लैंडर सबसे कठिन जगह उन्होंने अभी तक पार कर लिया। अभी दिल्ली दूर नहीं है पर
ये पहाड़ को हम पार करते हुए एक और पहाड़ चढ़ना है। We're on this one hill. This will take us down to the campsite that we were assigned to, but we didn't make it back because we wanted Globelander to cool off. Globelander's worked really hard so far. So this one more hill down and then one more hill up, and we should be on civilized roads. Now this would be a descent. The question I always ask myself in situations like this, will we make it? I don't take anything for granted. And I hope if you're watching this far, you're as curious and interested to know if we will make it and get help as Globelander needs. It's Globelander that needs some help, and we'll give it all the help it needs once we get to a point where we can. Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru, Satnam Vaheguru. Vaheguru ji da Khalsa, Vaheguru ji da Fateh. Ya Allah Madad Ali. जोर से बोलो जय माता दी, डट के बोलो जय माता दी। ये एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, यहाँ राह भी नहीं है, और हमारे टायरों से दरख्वास्त है कि भाई झेलने से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Now it's time to go down this hill. Well, it's a mountain really. This is like driving in the Western Ghats. If we were allowed to drive on trails and create trails in the Western Ghats, यही same लगता है, पर इतना majestic तो नहीं, क्योंकि वहाँ everything is closer by. यहाँ पे एकदम विस्तार से फैला हुआ है ये formations, ये canyons. This is a easier descent than what we were coming through. Gradually this goes lower and lower, which is okay, and we now invoke the brake gods to keep us steady, because that's all we need now is the brakes. This is the descent. It's fairly steep, so we need to make sure that we keep Globelander steady, and it will need some rest as soon as we get down so that we can keep the brakes cooled. This is a straight down, it's not a switchback down. Someone decided to cut a road and say, okay, let's go straight up. Now it's let's go straight down. And we also must realize that Globelander is carrying more weight than normal. With the tent, the awning, the bumpers. It's strong for the suspension. We have suspension strong enough to hold it, but it's still weight nonetheless. This is the last push downwards, and then it should steady out. A combination of using the brakes and engine. We're on first gear, giving me the traction to slow it down, because the normal traction control is disabled. To rely on good old manual driving. All the automatics in the car are suspended till we fix it. We have an error code in the onboard computer that we have, and we need to go and have that error code taken a look at by a Toyota dealership. The closest one is Salt Lake City. कल संडे भी है, पर सॉल्ट लेक सिटी में मेरा भाई रहता है, तो एटलीस्ट रहने की एक जगह रहेगी और मंडे को इसको टेकिंग केयर ऑफ करेंगे। ये प्लान है, अभी होता क्या है आप दोनों से। तो आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो जय हो भाई लोग और बहन लोग। आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर, हम नीचे तक पहुँच गए। अब बस एक ही और पहाड़ चढ़ना है, पर उन पहाड़ों का जो रास्ते हैं काफ़ी वाइड हैं और
स्टीप है ज़रूर, पर बहुत ही वाइड है और फ्लैट है, पत्थर नहीं है. सो इट्स अ मच बेटर रोड एंड होपफुली उसको चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. वाहिगुरु आपकी मेहर और कृपा. तो हम आए थे दोस्तों, वो आप वहाँ देख रहे हो ना, एक पिलर, एक खम्भ, एक स्तंभ जैसा जो ऊपर है. मैं इसको पैन करता हूँ वहाँ. तो वी came from the other side of that entire ridge, and now we're in flatter land. You can see the Colorado River right there in front of you, and we're getting down to that level and slowly making our way to the last hill to finally get out of this canyon. This is the White Rim Canyon. Let me tell you, if Globelander hadn't decided to pack up, we would have made this entire White Rim, and I'm telling you again, I'm coming back to finish it someday. I think that calls for a drink. We are now safely on river level, and we're going to be in this phase till we get to the final mountain, which has better roads, wider roads, but they're also steep switchbacks, so we're not out of the woods yet. I think the real hero in this whole thing is still Globelander and its brakes, because what I was worried about yesterday when there was overheating is the brakes. I know the engine would make it. I could use the manual shift, the Triptronic in this. I just could not shift up to high, 4 high. So I'm now in a constant state of 4 low, which in this terrain is okay. It's perfect, what the doctor ordered. And now how do we get back to the main highway and drive 4 low? That'll be a bigger challenge. So we have to have it towed on a flatbed and taken to a dealership. Today's Saturday, so by the time we get to a dealership, they may have shut. So we'll have to find a place to hunker down for 2 nights and then take things on Monday. But thanks for joining us this far. You may as well stick around for the rest of the story. सुबह के 7:30 बजे बहुत कामली और जेंटली बह रही है. कोई लहर नहीं, बस शांत अपनी मंजिल की ओर. और हम हमारी मंजिल की ओर. ये जो वीडियो आप यहां तक देख रहे थे, ये थी हमारी एडवेंचर. ये दिखाने के लिए कि अंगदान करने के बाद भी, एक किडनी पर जीकर भी, अगर आप चाहो तो कैसी भी जिंदगी जी सकते हो. मर्जी तुम्हारी है. स्वास्थ्य और सेहत का मामला, इससे आप घबराइए नहीं. मैं इस उम्मीद से ये सब करता हूँ, बेखौफ, कि मैं 2 जिंदगियां जी रहा हूँ. एक खत्म भी हो जाए तो दूसरी तो है ही. ये थी गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर की एडवेंचर. गिफ्ट ऑफ लाइफ आप कर सकते हैं. अंगदान करो और अंगदाता बनो.
we're driving through the rock mines, I would call it. ये पत्थर हिलने डुलने लगेंगे तो समझो कि हम एकदम चकनाचूर. They're lying so precariously. थोड़ा सा इधर उधर हिल गया ना, एक पत्थर भी 10, 12, 20 पत्थर साथ में आएंगे. How stupendously magnificent are these walls. All the rock that surrounded the flat surfaces have fallen off, chiseling it off into these gigantic walls. It's like nature has chiseled and sculpted all of these walls bit by bit using water, wind, and maybe a little seismic activity. ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, वो जो गाना है बहुत सही बैठता है. ये ना तो So I got to tell you something that happened now. It's a miracle. Actually, मैं गाड़ी रोक के मैं आपको मेरा डैशबोर्ड दिखाऊंगा. This is my dashboard. जो earlier task off, check engine light and traction off का signs दिखाई दे रहे थे. We just did a drone shot. दीपाली ने गाड़ी चलाई. शायद उसके गाड़ी चलाने में कुछ जादू था, शायद उसके प्रेयर में कुछ जादू था कि इस गाड़ी को उसने ठीक कर दिया. But when I sat back to drive the car, everything seemed normal. All the lights went off. I could switch back to high 4. ये चमत्कार नहीं है तो कुछ और नहीं हो सकता है भाई. I have no idea what to say, but this just happened. And your touch, and the prayers work through your hands. I just can't believe what just happened. My hair is standing. Floor blender, क्या हमसे मजाक कर रहे थे तुम? We were able to snap back to 4 high from 4 low, where it was stuck all day yesterday with the check engine light. And this is the last mountain to climb before we hit normal roads and get on with our journey. Till the next Toyota dealership, we don't have to go backwards, but we go forward and drive till Monday, and then take it and get it looked at after understanding what the fault codes mean. There is still a fault code that we need to decipher. Once we get to the internet, we will.